Hello, students. Today I'm going to start with your new poem of class 10th, and this poem is number 2. And poem name is Fire and Ice by Robert Frost. So, basically, everyone is familiar with the word fire and ice. But here, this poem is little bit symbolic, or we can say this is a symbolic poem where fire does not contain the meaning burning, where ice does not contain a meaning freezing. Here, fire and ice, these are symbolic, having a symbolic meanings. Like fire here refers to desire, wants, passion, and ice here refer is hatred, cold, and cruelty. So, what here poets try to refer is that fire and ice are two things that could end the world. Now, this poem contains 9 lines, and one by one I read it in front of you and explain it to you what are these particular lines are referring by the poet. So, moving on. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So, according to the poet, if we talk about him, if we talk in the prospect of him, what he was trying to say that few said that the world will end with fire due to desire. As I already mentioned you earlier that here fire does not mean burning. What it means is due to desire, a want. Okay, so a passion. So here what he is referring, some say means he's not talking about himself. He is what he's talking about, what that regular people, नॉर्मल पीपल आर सेइंग, यानी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो दुनिया ख़त्म हो सकती है वो फायर से, पर वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो आइस से ख़त्म की जा सकती है. आइस, जब हमारे दिमाग में आइस वर्ड आता है, वी शुड नॉट थिंक अबाउट फ्रीजिंग, वी शुड, बिकॉज इट्स अ सिम्बॉलिक, इट हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग ओवर हियर, तो हम दिमाग में रखते हैं दैट Ice here refers to hatred, cold, cruelty in your heart. So, यहाँ पे हम उस ice का मतलब समझते हैं. From what I have tasted of desire, अब कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया ख़त्म हो सकती है फायर की वजह से, वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया ख़त्म की जा सकती है आइस से. पर यहाँ पे जब पोएट अपनी बात करता है, from what I have tasted means what he experienced, what he think of that what he think of desire refers to fire. ठीक, जब वो उसे जितना डिज़ायर के बारे में पता है, वो जितना डिज़ायर के बारे में जानता है लोगों की, वो जितना वांट के बारे में जानता है, that it's a very striving factor, it's a very strong driving factor among the people, and it can like demolish, it can perish the country, it can perish the whole world. So like it can put an end to the world, the fire, according to the poet, because he must have experienced that kind of thing in his life. I hold with those who favor fire. I hold with those. Here what he is saying that he is agreeing with those people, like here
two people are debating, like two sides are debating. One is on side of fire, which means like passion, people who are desired, जिनको जो अपनी डिज़ायर के लिए, अपने पैशन के लिए दे could do anything, they don't care about other things. वहीं पे अगर हम बात करते हैं आइस की, तो आइस हेट्रेड, कोल्ड, क्रुएल्टी, तो यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे उसका कहना है या उसका मानना है कि जो उसने एक्सपीरियंस किया है, जो उसने उसकी टेस्ट के अकॉर्डिंग वो किसको फेवर कर रहा है, वो उन लोगों को फेवर कर रहा है जो फायर के तरफ हैं, यानी जिनके जो जो इस फैक्टर को मानते हैं, जो फायर को ड्राइविंग फैक्टर मानते हैं. ठीक है. सो एंड बट now moving on to the next line, but if I had to perish twice, it means if I had to perish twice, I think I know enough of hate. Now again what he is saying, that he is agreed with those also who is on the side of hatred, that is on the side of ice. So he is saying कि अगर इस दुनिया को दोबारा ख़त्म करना है या दो बार ख़त्म करना है, ठीक है, तो पेरिश, यहाँ पे पेरिश PERISH, पेरिश मीन्स टू डाई, एंड. और यहाँ पे हम किसके एंड होने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे वर्ड के एंड होने की बात कर रहे हैं. द वर्ड कुड एंड इन either with the desire, like with the fire, or we can say either it could be the like it could end with the ice also, like hatred, cruelty. तो उसका अब यहाँ पर कहना है, what he is saying that but अगर मुझे दुनिया को दोबारा ख़त्म करना है तो, या उसका एंड अगर होना है, तो उसको हेट के बारे में भी पता है. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, उसे हेट के बारे में भी पता है, जितना वो हेट को समझता है, ठीक उसी तरह जिस तरह वो डिज़ायर को समझ रहा था, जितना उसने एक्सपीरियंस किया है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जैसे उसने हेट के बारे में बताया हमें, वैसे ही अब वो कह रहा है कि अब वो किसको एक्सपीरियंस कर रहा है, अब वो एक्सपीरियंस कर रहा है हेट को. जैसे उसने भी डिज़ायर को एक्सप्लेन किया, अब उसने कहा कि जैसे वो हेट को एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर वो हेट को जितना जानता है तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसको एंड करने का, वर्ड को एंड करने का, उसके डिस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. At last, what he is saying that destruction ice भी कर सकता है, अगर हमें दुनिया को दोबारा एंड करना है, ठीक है, तो ice could also be the factor. It means hatred could also be the factor according to the poet, and it could be one of the great factor, and it will be sufficient to end the world, to perish the world, to create a destruction of the world. So here we understood and we concluded in this poem, we can conclude this poem by saying that people are debating, people are striving, people are fighting for their needs, for their desire, their wants. They could do anything. They could even end the world to just fulfill their needs, to fulfill their desire actually. And next thing what he was saying, that just because of that hatred inside their heart, their cruelty with others, their cruelty with animals, their cruelty with other peoples, could also create a destruction in the world.